बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करने वाले हैं और पहली बात तो ये है कि कितनी इक्वेशंस हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तीन तरह की इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है vf equal to vi plus at, and second one is s equal to vit plus half at square, and third one is 2as equal to vf square minus vi square. These are three equations of motions. Now let us prove the first equation of motion. First of all, first equation of motion, vf equal to va plus at. We have to make a graph for this purpose. हमें इस मकसद के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया देखिए। A body is moving from A to B. A to B is moving, and this line shows acceleration. This point is A, and at this point the velocity is vi, and at this point B point the velocity is vf. The velocity is vf. vf is called final velocity. अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं कुछ लाइन डॉटेड है। मैंने ड्राइंग किया है बी को यहाँ इस लाइन के साथ, बी से परपेंडिकुलर गिराया है मैंने डी पे और ए को सी से मिला दिया। नाउ आई हैव अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, और नीचे एक रेक्टेंगल भी बनती नजर आपको आ रही है, ए सी डी ओ। फिलहाल फ्रॉम द फिगर मैं एक्सेलरेशन को लिख रहा हूँ। इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। It is a perpendicular over base. This line is perpendicular, and AC is the base. Perpendicular over base is called acceleration. It is the basic definition of acceleration. Now, what is perpendicular? BC. From figure, you can see BC is the perpendicular, and the base is AC. Then BC को हम लिख सकते हैं BD minus CD. कैसे? BD total, CD निकाल दें इसमें से, तो you can write BC is equal to BD minus CD, and AC is equal to OD. AC is equal to OD होता है। So ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं। जहाँ पर था BC वहाँ आ गया BD minus CD, जहाँ AC था वहाँ आ गया OD। Now again from the figure, what is BD? BD shows BF, and CD shows VI, and OD shows T। तो 1 लिखा नीचे इसके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको 1 से किया तो यही आ गया, A को B से किया तो AT आ गया। तो ये माइनस का VI जब आप उसको राइट साइड पे शिफ्ट करोगे, इट बिकम्स पॉजिटिव VF। नाउ वी गेट द क्वेश्चन VF इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे VF इक्वल टू VI प्लस AT। VF इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा।